simple introduction to computers. So as you all know, जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड में यूज हो रहा है. कंप्यूटर के लिए अब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर हम इसका यूज नहीं करते हैं. So let's see what is computer. As we all know that it is a definition of computer, that what is a computer, that is it is an electronic device that accepts data, perform operations on data and presents the result, then stores the data or results and mute it and give you desired results. So here it has four primary operations that are input, processing, output and storage. So first of all, let me explain you one cycle. Computer follows a cycle, that is IPO, that is input, processing and output. How? See, अगर हमें कोई भी काम करना है, like if I want to make a assignment, for that purpose मुझे पहले input क्या होगा, मुझे सारा का सारा कंटेंट कलेक्ट करना पड़ेगा. प्रोसेसिंग क्या होगा, मुझे उस सारे कंटेंट को एक जगह पे सबको लिखना पड़ेगा. देन एट द एंड मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, मुझे एक असाइनमेंट बन के तैयार हो जाएगी. सो कंप्यूटर कह लीजिए या आप कोई भी टास्क कह लीजिए, हम आईपीओ को फॉलो करते ही हैं. इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर बात करें तो हमारे पास इनपुट क्या है, दैट मीन्स एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग मीन्स performing operations on that particular data. Then output is that if you want to present the results, so for presenting that you need output devices. And there is also a storage, that means if you want to store the data or save the data in your machine, so we use storage devices for that purpose. Now first of all, let's see how what is data. For understanding the terms about that is input, output, storage devices, let's understand what is data. So what is data? See, if I simply write some numbers 1, 2, 3, 4, so it is a data. It is simply a data. But if I say these are the roll numbers of students, then it become a information. तो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कलेक्शन हो सकती है, फैक्ट्स की, फिगर्स की, एंड डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन. डेटा कैन बी यूज्ड बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म effective and successful operations of management. Data is very useful for generating reports, graphs and statistics. For example, like students fill an admission form when they get admission in the college. फॉर्म में क्या क्या होता है, फॉर्म में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, लाइक स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, फादर नेम है, एक्सेट्रा. और इसका पर्पस क्या होता है कि हम सारा का सारा डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं स्टूडेंट का. नाउ इंफॉर्मेशन एज आई टोल्ड, लाइक इफ आई सिंपली सेज दैट it is 1 2 3, these are the numbers, then it is a data. But when I say these are the roll numbers of students, then it became information. So the manipulated and processed form of data is called information. So it is used for making decisions. Then what is an example? The data collected from sensors is used to generate different type of information. So that is the example of information. Now next is the characteristics of a computer. So what are the various characteristics? See, characteristics actually क्या हैं जो हमारे कंप्यूटर को डिफाइन करती है. फीचर्स क्या है, तो फीचर्स इसने मुझे अलाउ किए हैं जिनकी हेल्प से जो कंप्यूटर है बहुत ही पॉपुलर है. सो क्या है हमारे पास? सबसे पहला फीचर है स्पीड. स्पीड की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर जो है हमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. लाइक कुछ भी है, अगर मुझे कुछ एनालाइज करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग उसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं. You can say computer can perform million of operations on data in 1 second. वही अगर एक काम ह्यूमन करे तो उसको कुछ काम करने में टाइम कंपेयर टू ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस. दैट मीन्स कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये अपने आप से एग्जीक्यूट करता है. डेटा और इंस्ट्रक्शन जब भी
सेकेंडरी डिवाइसेस मीन्स जहाँ कहीं पे स्टोर होती है, वहाँ से फेच की जाती है, they immediately get stored into RAM. अभी इन सब टर्म्स के बारे में फर्दर सेशंस में देखेंगे that what is RAM and what are the secondary devices also. तो कंप्यूटर की एक ऑब्जेक्टिव और यू कैन से फीचर जो है तो ये भी है कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है. नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज. कंप्यूटर हैज internal as well as external storage. So you can say the stored data and programs are available anytime for processing. No feelings, as computer has no feelings. Like जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है कि कंप्यूटर ना तो कभी थकने वाला है, ना ही ये है कि लाइक इसने बोला कि मेरा मन नहीं है. बट एज अ ह्यूमन, जो ह्यूमन है ह्यूमन तो कह ही देगा ना कि नहीं राइट नाउ मैं काम नहीं कर सकता. सो कंप्यूटर में एज सच ऐसा नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंसिस्टेंसी. सी कंसिस्टेंसी मींस लाइक जो कंप्यूटर है, अगर आप कोई भी टास्क रिपीट भी कर कोई अगेन एंड अगेन, तो ऐसा नहीं है कि रिपीट करने के बाद वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए. कंसिस्टेंटली वो कोई भी काम कर रहे हो तो वो करेक्ट मैनर में ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे. Communications. So today's computer is mostly used to exchange messages as we are using the online platform for learning. So computer is the type for communications. Diligence. See, computer diligence feature is that कि computer like काफी लंबे टाइम तक काम कर सकता है. ये कभी ये नहीं बोलेगा like मैं थक गया. It doesn't get tired while working after hours or so it performs the operation the same accuracy as well as the speed as the first. कोई भी इसकी स्पीड पर या फिर इसकी रिजल्ट्स कोई भी इफेक्ट नहीं आता. Now next are the generations of computer. See what are the generations? That actually the generation to generation हमारे पास टोटली 5 generations है. इन 5 generations में जो कंप्यूटर्स में चेंज हुआ वो ये था, एक तो कंप्यूटर की स्पीड में चेंज हुआ. कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई और एक्यूरेसी बढ़ती गई. क्योंकि लाइक क्या हुआ, द न्यू टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या किया, improve the speed, accuracy and storage. Also you can say जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर्स बहुत लार्ज साइज के हुए. बट अब क्या हुआ, कंप्यूटर्स जो है आपने देखा पॉकेट पीसी भी आ, वहाँ एक लार्ज साइज का दैट मीन्स एक कंप्यूटर, एक रूम साइज का कंप्यूटर जो था हमने अब एक पॉकेट की फॉर्म में भी बना दी. सो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ पैरामीटर्स थे जब जनरेशन टू जनरेशन हमने वेरी किया कंप्यूटर में चेंजेस. सो वी हैव 5 जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो लेट्स डिस्कस दीज जनरेशंस वन बाय वन. सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. सी how large it is as compared to our pocket PC. Now in first generation computers we use ENIAC, EXEC, ADVAC, UNIVAC, these terms. Machines belong to the first generation of computers. What are the advantages of that? These computers were fastest of their time. उस टाइम पे बहुत fastest. They were programmed using machine learning. और जो मेन चीज थी वो ये था, हम यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को यूज करते हैं. कैन बी क्वेश्चन लाइक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसी. क्योंकि यही एक मेन चीज है जिसके बेसिस पे भी एक डिफरेंशिएट करती है जनरेशंस. नाउ द डिसएडवांटेजेस व्हाट आर दैट? अनरिलायबल, वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट ऑफ हीट, साइज बहुत बड़ा था, एसी की जरूरत थी. नॉन पोर्टेबल मींस कि बहुत बड़ा साइज था. So it is not easy to carry that computer. Lot of electricity consume करते थे. Maintenance required थी proper. Now next, the second generation computer is the example. In this generation we use transistors. So transistors were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation. So इसने वो सारी एडवांटेजेस थी जो मेरी फर्स्ट जनरेशन की लिमिटेशंस.
यहाँ हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स का, रिलायबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सी जनरेशन टू जनरेशन हम जब कंप्यूटर में चेंजेस कर रहे हैं तो हमें बेसिकली यही देखना चाहिए ना कि हमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है। जब जो मुझे प्रीवियसली प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी वो अब ना हो। सो स्मॉलर साइज हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेट लेस हीट, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड, प्रीवियस वर्क था वहाँ मशीन लर्निंग से काम कर। डिसएडवांटेजेस अगेन कॉस्टली था, एसी नीडेड और मेंटेनेंस। नाउ द थर्ड जनरेशन इज द आईसी। In this particular generation we used ICs, that is integrated circuits, in place of transistors. So single IC has many transistors, resistors and capacitors. So इसने क्या किया, साइज स्मॉलर किया, रिलायबल और एफिशिएंट। अगेन जो प्रॉब्लम्स मुझे सेकेंड जनरेशन में थी वो हमने थर्ड जनरेशन में ठीक कर, फास्टर किया, लेस हीट हो गई, स्मॉलर साइज और रिलायबल। आप अगर चेक करें तो जितनी थर्ड जनरेशन तक हम आए तो हम साइज स्मॉलर करते जा रहे हैं, क्योंकि एक रूम के साइज का कंप्यूटर कैरी करना प्लस अगेन एंड अगेन उसमें चेंजेस करना, मॉडिफिकेशंस करना, मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, स्टिल कॉस्टली और एसी। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ जनरेशन, that is the VLSI। यहाँ पर हमने VLSI that is very large scale integrated circuits को यूज किया। So these are having about 5,000 transistors and other circuit elements and their associated circuits on a single chip. So fourth generation computers more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution। इन्हीं के बाद से हमारे जो सिस्टम थे हम पर्सनल कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो नंबर वन एडवांटेज इज VLSI टेक्नोलॉजी यूज, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यूज ऑफ PCs, दैट इज फर्स्ट। नाउ अगेन व्हाट आर द एडवांटेजेस, स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा हो गया, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, very large internal as well as external storage capacity. And what are the various disadvantages? That is highly sophisticated technology required for the manufacture of microprocessor chips, ये limitation थी। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं प्रोसेस, मेन ड्रॉबैक क्या थी, कंप्यूटर्स की अपनी थिंकिंग पावर नहीं थी, नॉट देयर ओन थिंकिंग पावर। These are totally depending upon the instructions given by the users. So fifth generation में हम क्या करना चाह रहे हैं, आइडियल कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं जो है नहीं। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और क्या क्या फीचर्स वो डालना चाहते हैं, हैविंग देयर ओन थिंकिंग पावर, सोच सके खुद से, डिसीजंस ले सके, कैपेबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, लार्ज कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड एक्स्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ें अब जो फंक्शनिंग में है कि साइंटिस्ट है वो उस पर वर्क कर रहे हैं, एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल। मेन फीचर्स ULSIC, दैट इज अल्ट्रा लार्ज। अब काम किसमें करना है, अभी तक हम वेरी लार्ज पे कर रहे थे, वेरी स्मॉल पे कर रहे थे, तो हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर जब बात होगी तो AI की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप उसको एक तरह से इंटेलिजेंट मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट cheaper costs. Now overall, what are the advantages of computer? See, with the help of computers, easy processing of complex tasks can be done. It saves lot of time. Error in data processing are minimized because as a human कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है, बट जो मशीन है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करती। It has helped in making communication by using internet. It stores, retrieves and processes a large amount of data. It helps in multitasking of various.
These are the various advantages of